Okay. Alright people, a very good evening to all my lovely students of Mission MBBS 2024 batch. How are you all? Welcome all of you to this amazing class, a very important class, a very fruitful and yielding class today because we are going to discuss in detail the different classes of fungi. है ना? और fungus में से question ना आए ऐसा कभी हुआ नहीं है since the inception of NEET exam. तो आज अगर आप क्लास में हैं और आपके पास पेपर और पेन है और आप मैम के साथ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, then congratulate yourself. Yeah, it is definitely going to yield one question and that is a minimum. Yeah, difficult हो सकता है, easy हो सकता है. I am going to take care of all the kind of questions that can come from the topic of fungus, which is kingdom mycota. We introduced ourselves to kingdom mycota in the last class. I hope all of you remember. Anybody who is new to this class, है ना? Please subscribe to the channel because this is the most amazing platform for your NEET journey and you will realize this as you connect with us every day. Yes people, so आज थोड़ी बात कम करेंगे because हमें आज काफ़ी भारी भरकम फंगस की सारी क्लासेस, इसके सारे रंग रूप देखने हैं. We have to see all the shades and colors when it comes to the weird organism fungus. Yeah, she has been given a different kingdom, my children, because she has very, very differentiating features. Till now, people who are new to the class, I have all the love and blessings and a lot of hearty good wishes and welcome for all of you. Fun with Gaurav. Udhay said, good evening. Mayank Gautam, good evening, bache. Al-Shifa Siddiqui, good evening, beta. I'm absolutely fine. How are you? How are you? Atika Khan, good evening. So good to see you. You people are regular and that fills my heart. है ना? Aditya Pargi, good evening. Fun with Gaurav, हो गया बेटा. Hi, good evening. Share the session with everybody. 2022, 23, 24, 25, all aspirants need to be a part of only and only Aakash BYJU'S NEET channel and nowhere else. Okay people, Abhishek Bhardwaj, good evening bache. I'm absolutely fine. Blessings, Sachin, so good to have you always and always. Santi, good evening. Nikita Soni, good evening bache. Sachin Jaiswal, hello beta. Namaste bachon. Take care of yourself and be super attentive. Like I always tell you, if you want to feel different, if you want to be the change of education in this country, then you have to, you should, you must download the magnanimous, significant, magical, yeah, I am full of words of praise as I see this app which is going to change how education happens in this country, and Aakash BYJU'S always stands for the change. Yeah, we are the pioneers in everything. When we place our foot, things change. Yeah, it is bound to change. और कोई रास्ता है ही नहीं, है ना? Since last 30 plus years, Aakash BYJU'S has been furnishing the best doctors, the successful doctors, getting people selected, students like you selected to the most prestigious government colleges of this country. Yeah. So with that pride, I tell you that we are now offering the Aakash BYJU'S app free of cost for 14 days. Oh my God, you should be a part of it. Yeah. So the link is given in the description box. Download the app and explore it and let me know your experience. It is going to be something different. Last but not the least, we have Aakash BYJU'S conducting the India's largest mock test on 3rd and 10th of July. So you must think, I'm not a 2022 aspirant. Why should I be a part of this exam? Well, you should be, because you are different. You are the winner. Yeah, so you have to do things differently. You want to become a ranker and your journey starts now. You should get the exam flavor. You should know how NEET exam happens. What is the pattern of the exam? And the time for doing that is not when the exam is approaching. The time is right now. Okay, so register for this test and you will thank me later. And also, I'm going to analyze in depth the mock test, both the mock tests, which is 3rd and 10th of July. Pile Gaming, yes, I'm going there. नहीं, नीट कोई पोस्टपोन नहीं होगा. ऐसे सवाल अपने दिमाग से, ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें. Alright people, so in today's class we are going to start the sexual reproduction in fungus, which is very, very special. All in all, the sexual reproduction in kingdom mycota is said to be reduced sexual reproduction. It is not showing the conformative events as we see in sexual reproduction otherwise in higher organisms. Now what I'm going to explain you, the life cycle of fungus is not in your syllabus, but without understanding the life cycle of fungus, we cannot understand the different classes of fungus.
People, in the last class we discussed that the body of the fungus is characteristically known as the mycelium, and the ploidy of this mycelium, the body of the fungus, is a haploid structure. Now, haploid structure has no choice to undergo reductive division or meiosis. You understand that, right? So they cannot be a n/2 condition. No. So what is going to happen is two mycelia, let's say the positive and negative, let's assume male and female. Okay, they're going to come together, and at the time of reproduction, they're going to produce gametes, which are nothing but produced as a result of mitosis in the body. It's not like our body where gametes are produced as a result of meiosis. So now, when these two gametes, you know what I'm going to do? I'm going to make it very good for you. Okay, so you have the gametes from two different strains of fungus. I have named them positive and negative strains. Now people, gamete number 1, gamete number 2, there's yellow and white. The very first step in the event of sexual reproduction is plasmogamy. If this name troubles you, gamos means fusion. Forever and ever, from today onwards, whenever you encounter the word gamos, it means fusion. And plasmo word simply means the protoplasts, the cytoplasms. All these components are going to fuse together, as a result of which I get a common cell where I see that I have the yellow, I have the white, and I have the yellow nucleus right there. Aya. So now this phase of the mycelium where I get two different nuclei. Ravi, let's take the chat box out. The mycelium, do you see the stage? This is a very significant feature, and this is going to be the turning point when you understand fungus. Nobody will explain you fungus like this, textbooks won't. So please pay attention. Ye jo hua na, as a result of cytoplasms coming together, cytoplasmic components coming together. But the nuclei of these two mycelia have not come together. So this phase is called heterokaryotic phase. If this term troubles you, ma'am is here. Hetero bole to different, forever and ever, whether it is zoology, botany, first year MBBS, second year MBBS. Okay, and karyon means nucleus. Aya ma'am. Okay, hetero is different, so I have the difference. In some of the fungi, this stage is going to stay for a long time. The fungus is lazy. She is like, let the two nucleus dance together, I don't care. So that phase is called as the dikaryon phase. Dikaryotic or the dikaryon phase. Di bole to two. Are we together? But ultimately, eventually, these nuclei, this is not going to stay. Yeah, things have to come to normal. So ultimately, the two nuclei are going to fuse together. What did I just say? Two nuclei are going to fuse together. Fusing के लिए आज से जब तक bio, जब तक science पढ़ रहे हैं, fusion means gamos, marriage. So gamy will happen between the karyons or the nuclei from the chapter of cell. By the way, good news for you. I'm going to be starting chapter cell after this chapter because it lays the foundation of both botany and zoology, and I'm going to take care of it. Okay? So be sure that you attend every class. Now people, finally, what happens in sexual reproduction is the formation of a diploid structure called zygote. Aya? So now the zygote carrying both the nuclei, they are fused now, is formed. Okay? This is a 2N structure or diploid structure. If the terms haploid, diploid, they trouble you every now and then, please be troubled. Okay? They are supposed to trouble you. They're supposed to trouble everybody whose basics are not clear. That is why I'm going to teach you cell division, ploidy, meiosis, mitosis quite in detail and take care of all your troubles. Okay? अभी के लिए अपने को ये पता है कि कुछ मिलना मिलावट हुई है और कुछ बना है. अब भाई लाइफ साइकिल का मतलब होता है मैं जैसे स्टार्ट हुआ था मैं वैसा ही बन जाऊं. तो मैं हैप्लॉइड स्टार्ट हुआ था, है ना? मैं हैप्लॉइड स्टार्ट हुआ था, अब मैं डिप्लॉइड हूं. तो अब मुझ में रिडक्शन होगी, रिडक्शन डिवीजन जो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड कर सकती है, दैट इज meiosis. So meiosis will happen in this zygote.
and spores will be formed. Spores are one of the most significant things in the life of a fungus, whether they are mitospores or meiospores. Now people, in the last class we took care of all the mitospores. If you were regular, you know. If you were not, tension not. You will go and watch the class now from the playlist, okay, the very previous class. Now, since these spores are formed as a result of meiosis, they are called as meiospores. Okay, so sexual spores are the meiospores. Good, good, good. And they are going to be haploid. They are going to be haploid. And then they are going to go back to where they came from. They are going to germinate and form mycelium, which are haploid. But this mycelium is going to share the characters of the parents. That is what we made the promise of, कि sexual reproduction में ऐसा होगा. Now people, come back to me. Clearing the very basics of fungus like never before. और ये textbook में तो नहीं मिलने वाला. कितनी कोशिश कर लो. When I say that kingdom fungus is divided into classes, what are the bases? NCERT says this badi chup chup ke. And she's just whispering it into your ear. And I'm going to say it very clearly and loudly. This stage, when I'm looking at the parent who's going to give me the gametes to fuse, the structure of mycelium is the first criteria to classify fungus. Second, when this phase happens, whether the karyogamy is enhanced or it is just, whether this weight is not there or there, यहाँ पर बनती है fruiting body. Fruiting body. Ma'am, what is fruiting body? You don't know. You don't need to know. But एक classic example जो हम रोज देखते हैं, those are mushrooms. तो इस मशरूम में वो fruiting body बनती है. क्या वो उस फंगस में भी बनती है जो हमने लास्ट क्लास में देखा, जो ब्रेड को खराब करती है? नहीं. तो इस बेसिस पे फ्रूटिंग बॉडी बनी नहीं बनी, कैसी बनी, सेकंड क्राइटेरिया. NCERT says this. Now, I know you can't see the black pen. Calm down. Changing it. Third criteria is what kind of spores are formed. This is in fact the most important criteria, I tell you. So this is, my people, the third criteria. Are we good? Now, I would say draw this life cycle just to understand. Exam में आएगा नहीं आएगा, समझ आएगा नहीं आएगा, अपने को क्या करना है लाइफ में, अपने को समझना है सब्जेक्ट को, है ना? Let's go further and you will see me integrating this life cycle into every word I'm going to say today. Alright people, now like I said, this third criteria gives us a lot of light when we talk about the different kinds of fungus. At this point of time, you should know that the different kinds of meiospores or the sexual spores are oospores, zygospores, ascospores and basidiospores. Ma'am, क्या है ये? क्या है ये? इतना मुश्किल है ये, मुझे क्या पता ही क्या है? तो तुम्हें किसी ने कहा भी नहीं है. What I'm going to do is, I am going to explain each and every kind of spore as I go through the different class of fungi. And I'm going to make it super easy for you. है ना? लोग क्या करते हैं, सारे spores को अलग अलग देखते हैं. हम करेंगे ही नहीं. अपने को effort डालना ही नहीं है. We are going to do smart studies. Alright, so let's go. And you will see you know much more than others. The first thing that you have to keep in mind, यार स्टूडियो में भी मच्छर कहाँ से आ जाता है? It's so closed. Okay, people, the very first step where I taught you plasmogamy, this one, ये 3 तरह से हो सकती है. कितनी तरह से हो सकती है? 3 तरह से हो सकती है. जब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2 गैमेट्स आएंगे, पेरेंट्स से 2 गैमेट्स आएंगे, these gametes can be absolute mirror images of each other, absolutely identical. That kind of gametic fusion, or fashionably called as planogametic copulation, is called isogamy.
Again, gemi means coming together. Iso means absolutely same. All attention on the class, nowhere else. Are we good? Two gametes are coming together if they are absolutely identical. Another thing, they are not identical. Yeah? Then that is called as heterogamy or anisogamy. Bio mein, aaj se, botany, zoology, lala, anything. Science of life, whenever the word a or an comes, we know it means absent. We are good? Now, U means advanced form where you have a definitive egg and the sperm. So this is the advanced form where nobody is doubting or nobody is guessing it. We definitely know that the bigger one, immotile one, is the female gamete and the smaller motile one is the male gamete. Aya, ma'am. Okay, so iso and isougamy are the three forms of plasmogamy that ma'am just discussed here. Very good. No problem. This is also called gametic fusion is fashionably. If you want to learn it, learn it. If you don't want to, it is okay. It is called planogametic copulation. Now, in the last class, I gave you some examples of fungi that you see in everyday life that are popular that you know of. You know the common bread mold. You know mushrooms. And you know the saga of penicillium, which created the first antibiotic. Aya. So now these three fungus definitely itni sharif nahi hai fungus that they belong to the same group. Excuse me, machhar kaat gaya mujhe. Okay, so now comes the classification of fungus. Always remember the criteria of classifying fungus. Yeah, what did ma'am tell you? The structure of mycelium. Let's write together. Second is the fruiting body. मैम ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है? आप ना मतलब परेशान कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया फ्रूटिंग बॉडी. सो वेरी गुड अगर समझ में नहीं आया, बिकॉज वो आगे समझ में आने वाला है. राइट, वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. ओके, just to help you visualize, I give you the example of mushroom, which is what you're eating is a fruiting body, not a fruit yaar. Not a fruit. Fruit angiosperms पे ही छोड़ दें. It's not fruit, it's fruiting body. Fungus कुछ style मार रही है ऐसे. Okay. Third is, या ये सबसे special है, the kind of spores. तो अब घुस जाते हैं अंदर classification of fungus. Alright people, yeah, this is an intense session. Keep your minds and hearts ready. Keep a water bottle ready. And keep breathing nicely. Now fungus को सबसे पहले अगर mycelium के basis पे divide करें, जो कि simplest classification है, then in the last class we studied that there are two type of mycelia because there are two type of hypha. One is aseptate and the other one is septate. You know what septa is? So aseptate mycelium is a multi-nucleated structure. Makes sense to us, should make sense to us, and septate mycelium is a multicellular structure. If you're new to the class and you're facing difficulty in all these terms, well, you should, because you missed the class. So go to the playlist. First of all, subscribe to the channel, go to the playlist, watch the previous session and make your life very, very easy. People who are regular to the class, lots of love to you. Please share the session and like the session like you always do. All right, people. What did I just say? Aseptate mycelium, this multinucleated, coanocytic, aya, multicellular, aya. Okay, now folks, aseptate mycelium, I spoke to you in the last class, is seen in lower or primitive fungi called as the Phycomycetes. इतना हमने लास्ट क्लास में किया था. अच्छा, ये जो प्रिमिटिव और लोअर है ना, ये बेचारी कंफ्यूज फंगस है. ये इवॉल्व हो रही थी प्रोटिस्टा से. कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको खास. इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऊ एंड जाइगो. एनसीईआरटी खेल गई यहाँ पर. ओपन अप एनसीईआरटी मे बी नाउ और आफ्टर द क्लास, वॉट एवर यू विश फॉर. She doesn't speak categorically about the oo and zygo, but she explains quite well.
that there is Oomycetes and there is Zygomycetes and both of them are different together. This part, this particular paragraph or section of NCERT is confusing. Let's take care of that. Talking about Oomycetes, it is also called as algal fungi. यार मैम लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स कम थी, अब आप कह रहे हो एल्गी भी आ गई, फंगस भी आ गई. Calm down people. Why it is called algal fungi? इसी की वजह से बहुत टाइम तक फंगस को लटक रही थी वो बीच में, उसको लोग प्लांट किंगडम में डाल रहे थे, क्योंकि एल्गी में, एल्गी क्या है, प्लांट किंगडम का मेंबर है. प्लांट किंगडम में बड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ प्लांट किंगडम. इसकी सेल वॉल प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज की बनी होती है. सो एल्गल फंगाई आया. नाउ when I talked to you about the asexual spores in the last class, I told you that zoospores are not really liked by many fungi. Zoospores are rare, in fact. The most common significant asexual spores in fungi are the conidia. This one, being a primitive fungi, is producing zoospores just like algae. Ma'am, ये algae क्या है? नहीं समझ में आया? Very good. It will come in plant kingdom. Don't worry at all. Algae are the pioneers, the first members of the plant kingdom. Alright people, now what comes is, अच्छा ये बड़ी important बात है कि Phycomycetes में भूले नहीं, ज़्यादातर question यहीं से आता है, that mycelium will be aseptate and hence multinucleated or choanocytic. Now sexual reproduction is interesting. Let's go to the sexual reproduction. Okay, so making it very decluttered and easy and nice and yielding for you. Now sexual reproduction में इसमें मिले दो sex organs. The male sex organ is antheridia and the female is oogonia. Oogonia. Okay, and what happens is called as gametangial contact. यानी कि इसमें plasmogamy भी हो सकती है, but there is one more form called as gametangial contact. Very important. यार ये ना थोड़ा सा शरारत है. This is a very primitive feature. भाई तू चुपचाप गैमेट्स को फ्यूज करवा ले और बना दे जाइगोट. नहीं हुआ. प्रिमिटिव फंगस है, स्मार्ट नहीं थी, बेचारी कंफ्यूज थी. अब गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है? ये है जी फीमेल सेक्स ऑर्गन. माइसीलिया था यहाँ पे बेचारी का, कोएनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड माइसीलिया था, उस पे बना फीमेल ऊगोनिया, और वहां पे ही एक छोटा सा बन गया मेल ऊगोनिया, एंथ्रीडिया. आई एम सॉरी, मेल एंथ्रीडिया. यार ये ना फ्यूज नहीं करेंगे. Look at the term contact. Gametangial contact is the sexual reproduction seen in Oomycetes. Okay? इनके बीच में एक fertilization tube बनती है. इनके बीच में एक fertilization tube बनती है. Do you see that? और मेल अपने contents फीमेल को भेज देता है, सिर्फ ट्रांसफर कर देता है. सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ कंटेंट्स. भाई बेचारे का न्यूक्लियस, बेचारे का सब कुछ, साइटोप्लाज्म, सब कुछ. ट्रांसफर ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम मेल टू फीमेल हैपेंस ओनली थ्रू कॉन्टैक्ट एंड देयर इज नो फ्यूजन. आया. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस फीमेल नाउ, दिस oogonia, after receiving the nucleus from the male is diploid, becomes diploid, and this diploid structure is called oospore. So a question that will come in your NEET exam is, oospore is the consequence or the result of sexual reproduction in Oomycetes. Oomycetes. और ये ना इतना आसान हो गया, Oomycetes बोले तो oospore. तो यहाँ ना हम जाइगोट नहीं बोल रहे हैं, हम हिचकिचा रहे हैं. क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि जाइगोट is formed as a result of proper fusion of the male and female gamete. Here there is no proper fusion. आया. अब लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है. Fungus doesn't want to stay in the diploid stage. So, meiosis will take place here and haploid spores will be formed. ठीक है, तो oospore में ही meiosis होगा. मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ. ये देखो,
oospore is a result of fertilization. आया? Meiosis will happen leading to formation of haploid spores बोले तो N spores. And I will get the new organism. I always have to go back from where I start. Aya. Now, important members of this one. Which one? Oomycetes. Important members, examples of Oomycetes. Some of you have been waiting for this. अब मैं बनाऊंगी जगह. बनाए? तुम भी बना लो अपने नोट्स में जगह. The two common fungi that you hear about. यार ये जितने भी fruits हैं, इन पे आके ग्रो करती है, ब्रेड पर आकर ग्रो करती है. It is called the black bread mold. The most common question asked in NEET is what is black bread mold? Rhizopus. I'm so sorry, that is not Oomycetes. That is Zygomycetes. I'm so sorry. इसकी classic example is Phytophthora. Phytophthora लिखा भी है वहाँ पे. Infestans. काफी important question है. Phytophthora infestans इसलिए popular हुई because it caused a very serious famine in 1800s. I think 1845 to 1847 was the Irish famine. लोग भूखे मर गए थे वहां पर because it causes late blight of potato. Late blight of potato. Potato सारा खत्म हो गया. आलू over. आलू नहीं मिला, लोग मर गए. Something like that. Let's see the chat box. Phytophthora infestans को याद पक्का करके जाएं. बेहद बेहद important है. All good people? भाई किसने पूछा ये डाउट? थोड़ा रवि मुझे डाउट्स दिखाना इनके. यशवंत ने पूछा है which topic is next in the line by line series of NCERT. Line by line series of NCERT में next session है Protista and Monera. I'll be reading Protista and Monera from NCERT and taking out MCQs from there क्योंकि question वहीं से आएगा. हाँ अभी we can go down. सब ठीक है? Alright, लिखते जा रहे हैं, लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा. Next आती है Zygomycetes. What about Zygomycetes, ma'am? Now, she said नहीं यार, I can't have cellulosic cell wall. अगर मेरे पास cellulosic cell wall होगी, तो लोग मुझे फिर से plant kingdom में धक्के मारते रहेंगे. I have to earn the title of kingdom fungus. So she has chitin cell wall. Very important. She is also aseptate and choanocytic. She does not form zoospores. She's moved on. Okay? She's going to make common asexual spores. Not as common as conidia. Ravi, we are good. Not as common as conidia, but the sporangiospores. Remember? यार ये जो classification of asexual spores है, please इसकी class देख लेना. Sure, short question है. Sporangiospores, which are non-motile thin-walled spores. Evolution तो होगी, नहीं होगी तो organism exist नहीं करेगा. आई बात समझ में? Important members of Zygomycetes are Rhizopus, जो मैं तुम्हें ऊ में पढ़ा रही थी गलती से. Rhizopus stolonifer, म्यूकर म्यूसिडो. मुझे चैट सेक्शन में सारे डाउट्स मिलते हैं. नॉट चैट सेक्शन, द मेन कमेंट सेक्शन. म्यूकर म्यूसिडो इज द कॉप्रोफाइलस डंग मोल्ड. गोबर पर ग्रो करती है ये, बेसिकली एनिमल एक्सक्रीटा पे, तो कॉप्रोफाइलस है. राइजोपस स्टोलोनिफर इज द ब्लैक ब्रेड मोल्ड, इफ यू विल, ब्लैक ब्रेड मोल्ड. क्वेश्चन more common than the previous one. ये तो आया ही आया, तथास्तु. अब ना मैम आपने ये सारी बातें तो कर ली, आप छुपा रहे हो about the sexual reproduction. Sexual reproduction. इसने भी शरारत करी, being the primitive fungus, confused है बेचारी. Okay, so इसमें आपको क्या मिलेगा? Gametangial copulation.
अभी क्या हुआ था, गेमिटेंजिया सिर्फ कांटेक्ट में आए थे, फ्यूजन नहीं हुई थी। अब कुछ ट्राई किया गया है फ्यूजन करने का। शी सेड यार मैं तो करूंगी फ्यूजन, बिकॉज सच्ची में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन बनती है, बट इस बेचारी के पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। शी डजंट हैव एंथ्रीडी और ऊगोनिया। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। ओके, so please don't think that it will have Enthredia and Oogonia. Now what will happen? Your two Gemitangia will come together of two strains, positive, negative strains. When they come together, they will dissolve the walls. जो ये दो उनकी walls है ना, जो contact में आ रही हैं, ये दो हाथ हैं, ठीक है? This one is the positive mycelium, this is the negative, two different strains. कोई एंथ्रीडिया ऊगोनिया का चक्कर नहीं है। अब ये दोनों साथ में आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में ये गैमेटेंजिया बन गए, सॉर्ट ऑफ गैमेट्स बन गए। जब ये आए ना तो अभी तक सिर्फ इतना हो रहा था, अब ये स्पेस, इन दोनों के हाथों के बीच का स्पेस विल डिसोल्यूट एंड there will be finally some fusion. So copulation is fusion, and as a result of which I get a very thick walled, very thick walled black structure called as the zygospore. So this is going to be a diploid structure, people. I'm still not calling it zygote. I'm still not calling it zygote, but akin to that. Sort of. So यहाँ इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन oomacetes oospore, zygomacetes zygospore. अब क्या जान लोगे, इतना तो इजी बना दिया है। बॉटनी इज सो इजी, कॉन्सेप्ट में से टर्म में से कॉन्सेप्ट, बस आंखें कान नाक खोलना ही तो है ना। जाइगोस्पोर में फिर मियोसिस होगा बिकॉज फंगस को आदत है। अच्छा ये ना प्रिमिटिव फंगस ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करेगी जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं। काइंड ऑफ अनस्पोकन सी बात है, अदरवाइज ये थिक वॉल्ड स्पोर क्यों बनेगा ना। लेकिन अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो ये बढ़ती जाएगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर से। उसमें इसका खर्चा भी कम है और बढ़ भी जल्दी जाती है। कूल। उसके बाद आ जाती है जी सेकंड, called as the advanced fungus, septate mycelium वाली फंगस, यानी कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एस्कोबेसिडियो ड्यूट्रो। एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आया? Why is it called as the sac fungi? I have no clue. But let's start from the very basics and then go to the advanced concept why it is called sac fungi. Okay, with me, noting down with me. Yeah, let's see the chat box. अब मेरे पास सेप्टा आ गया, और माइसीलिया भी जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेटम पर सिर्फ क्रीप कर रहा है, अच्छी खासी ब्रांचेस दे देगा, नेटवर्क सा बनाएगा। आया? उसके बाद सोहम, योर नेम इज ब्यूटिफुल यार। आजकल आवाज मेरी फट रही है ना? थैंक यू सो मच। नो, हर वॉइस इज लाइक माइन। ओके, KYY, थैंक यू सो मच बेटा। बी माई हीरो स्टूडेंट नाउ, या लेट्स प्ले इट बोथ साइडेड। गिव मी 720 स्कोर or at least 360 or at least 100% in botany and be my hero student and put your real beautiful name. Would you? Anything else? कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट आए रवि तो बताओ इनका। हाथ भेजते रहते हो यार। बच्चों देखो, आज की क्लास सीरियस है। हाँ, ये प्यार बांटने की क्लास, आई रियली अप्रिशिएट ऑल दिस, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि फंगस एक ऐसा टॉपिक है, इट इज एक्सप्लेन्ड वेरी डिफरेंटली इन टेक्स्ट बुक्स। बुक्स में कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी तो ज्यादा बात करती नहीं है और सवाल आ जाता है। हाँ, तो आज जरा ध्यान दो। नहीं वंश, नो। इफ यू स्टिल फील कि मैम से बात करनी थी और कोई डाउट रह गया है, मेन कमेंट सेक्शन इज राइट देयर फॉर यू, उसका इस्तेमाल करें। सचिन काइंड ऑफ।
Bhavesh Kumar, today is your first class. Now all the classes will be here. Congratulations for being a part of our channel. Subscribe to the channel so that you don't miss any class of any subject. यार शाइनी डोलीपोर सेप्टम में से क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर तुम्हें क्वेश्चन मिला होगा तो वो 2010 से पहले का होगा या 2012 से पहले का तो होगा. नहीं है यार सिलेबस में. चिल मारो. आया. अच्छा, ये ना जो हम पेपर के पैटर्न से हट जाते हैं, we have this tendency that we pick up some book, some material and start solving questions. तो उसी वक्त हमें नीट का पैटर्न नहीं मिलता है. इसलिए आपको नीट का मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है. दीजिए. दैट इज 3rd and 10th of July. आया. अरे ज्योति, पीपल हु आर आस्किंग मी मैम प्लांट फिजियोलॉजी कब करोगे. आप मुझे जानते हो. यू थिंक कि आप लोग इतना मांग करोगे, यू आस्क फॉर प्लांट फिजियोलॉजी और मैं नहीं करूंगी. देयर इज अ सरप्राइज कमिंग फॉर यू. अगले 1-2 हफ्तों में चैनल पे बहुत कुछ होने वाला है. एंड आई प्रॉमिस यू वॉट एवर यू आस्क फॉर विल बी गिवन टू यू. मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, वो आपको दिया जाएगा. लेकिन हमें सिर्फ आप रेगुलर चाहिए हो क्लास में. तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को. शुरू हो गए अब. चलो, वी आर गुड. पढ़ाई करो. देखो अब इसमें क्या होगा यार. Ascomycetes is a grown-up fungi. She is advanced. She is not going to reproduce by sporangiospores or zoospores. She moves on to the advanced spores which are conidia. यार ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार आता देखा है. Conidiophores, conidia are characteristic feature of this one, Ascomycetes. ना पिछली में है ना अगली में है. समझदार लोग समझ गए मैंने क्या बोला है. भाई ना पिछली फंगस में है ना अगली में है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई जस्ट सेड. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स लाइक द पेनिसिलियम एंड द यीस्ट बेकर्स, ये सारी बेकिंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री, अल्कोहलिक बेवरेजेस इस पर डिपेंडेंट है. लेकिन वो एक यूनिसेल्यूलर मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का. मैम अगर यीस्ट यूनिसेल्यूलर है तो आपने काहे को रखा इसको एस्कोमाइसिटीज में. रख देते प्रोटिस्टा. भाई यीस्ट बनाती है सूडोमाइसीलियम और उसकी सेल वॉल झूठा सा माइसीलियम बना लेती है अपने सिंगल सेल्स को इकट्ठा करके. शी डिडंट गिव अप. शी इज इन फैक्ट owing to her super awesome uses, and her chitin cell wall, she found her place in Ascomycetes, and because she's an exception, she gains a lot of attention from the examiners. So you might as well pay attention to her. All right, people. Now comes my favorite part. I told you I'm going to apply the life cycle of fungus whenever I'm explaining you about any group of fungus. All attention on the screen because that is what counts. People, the haploid mycelium in advanced fungi is called as primary mycelium. It is not, there's no, there is actually, lekin secondary mycelium is not formed in Phycomycetes. In Ascomycetes, we have the primary mycelium, which is this one, the one with a single nucleus, है ना, क्योंकि इसमें तो सेप्टेट माइसीलियम है. तो ये माइसीलियम जो शराफत से पड़ा है, इसको बोल दिया वेजिटेटिव वाले को प्राइमरी माइसीलियम. अब आई जी सेक्सुअल मेच्योरिटी. पेनिसिलियम ने बोला मैं तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगी भाई. उसने कहा ठीक है कर, गैमेट्स दे मुझे. गैमेट्स आए. अब यार देखो किसी भी तरह से हो सकती है प्लाज्मोगेमी. बहुत सारे मेथड्स हैं, 2-3 आप जान चुके हो. सिंपल पे अटकेंगे. गैमेटिक फ्यूजन. मान लो आइसोगेमी थी, दोनों एक जैसे थे, साथ में आए, लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट. इन्होंने फ्यूज करके अपना सिर्फ प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया. पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट. डू यू गाइज नो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? क्लास 9th में पढ़ाते, क्लास 10th में पढ़ाते. वॉल निकाल दी, बाकी कंपोनेंट्स. आओ
न्यूक्लियस निकाल दिया, ओके, न्यूक्लियस निकाल दिया, बाकी कंपोनेंट्स। अब मेरे पास एक आया ऐसा सेल जिसमें 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, यानी कि स्ट्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं। इस स्टेज में एस्कोमाइसिटीज दोबारा एक माइसीलियम बनाती है। इस माइसीलियम में 2 न्यूक्लियाई हैं और ये काफी देर ऐसी स्टेज में रहती है। शी डजंट let the nuclei fuse immediately after plasmogamy. Yes, ma'am. Makes sense. She says, you know what? Wait and enjoy this phase, this stage. This is called as the second degree or the secondary mycelium. Now, people, something is going to happen. When she is in this stage, she starts forming a fruiting body which looks like this. It is just a body which is a grouping of a lot of mycelia. So this heterokaryotic stage where she got what she wanted nuclei of 2 different mycelia. Essence of sexual reproduction is to That happened, but फिर तो इसको पता नहीं बीच में क्या हो गया। इसलिए अब भी नहीं, अभी मैं चिल मारूंगी। लेकिन ये बहुत सारे माइसीलिया इकट्ठा कर लेती है एंड दे टुगेदर फॉर्म अ ह्यूज बॉडी कॉल्ड एज एस्कोकार्प। Which class of fungi it is? Ascomycetes. What is the name of the fruiting body? Ascocarp. आज से बॉटनी में जब भी कार्प वर्ड आया तो बोले तो फ्रूट। यार ये फ्रूट नहीं है, ओके? एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प के अंदर छोटे छोटे सैक्स बनेंगे, छोटे छोटे थैले बनेंगे, कॉल्ड एज एस्कस। क्या बोला अभी मैंने? छोटे छोटे सैक बनेंगे। Hence, there we go. It is called as sac fungi. Hence proved. मैथ्स में होता है ना ये, अभी भी होता है क्या? मेरे जमाने में तो होता था। Hence proved हुआ ही नहीं, मतलब मेरा तो कितनी बार स्ट्रगल करती रही, वो हुआ ही नहीं कभी। Bio is good. Let's see the chat box and the time. Oops. Time. All good, people? Are you happy? Okay. While I wait for your... अतरंगी हो यार तुम लोग। ओके, सबको समझ में आया क्या हुआ? कहानी अभी बाकी है, कहानी तो लंबी है। मेरे साथ तुम्हें छोटी कहानियां मिलने नहीं वाली है या? ओई पंखुरी मैम, क्या दीपक साहू बेटा, वेलकम टू द क्लास। बट ये बॉटनी की क्लास है। उल्टा कर दिया। चलो अब ना ये जो एस्कोकार्प है और जो एस्कस बना, ध्यान से सुनना। जब ये एस्कस या सैक बना तो इसको आई बुद्धि। शी इज लाइक, हाँ यार मैंने बहुत चिल मार लिया। फंगस को ना सिर्फ शरारत करनी है और कुछ नहीं है। इट इज अ किंगडम ऑफ, बस मेरे को कुछ अलग करना है। आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंट प्लेस कि मुझे वही अलग किंगडम मिले ही मिले। एस्कस के अंदर अब ये न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे and zygote formation will happen finally. With me? So, the question that you are going to encounter, why all this story I told you? इतना लंबा गाना मैंने क्यों रटवाया आपको? क्योंकि क्वेश्चन आता है कैरियोगेमी कहां पर होती है और जाइगोट में मियोसिस कहां पर होता है। The site is ascus. We are together? तो अब मियोसिस होगा तो जो स्पोर्स बनेंगे उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। आज के बाद कोई बोले कि बायो मुश्किल है और स्पेशली बॉटनी बोले तो लड़ लेना। अरे भाई कितना आसान है, कौन सी क्लास है फंगस की?
एस्कोमाइसिटीज। स्पोर्स का क्या नाम है? एस्कोस्पोर्स। और क्या करूं? नाउ कमिंग बैक to the classification of spores. Yeah, I told you I'm going to teach you about every spore as I teach you the class. Since ascospores, time to change the ink. Since ascospores are formed inside ascus, so these are endospores. अब what are exospores, what are endospores, ये तो मैंने बता दिया था सैक के। इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्स, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्स which happens when we study about fungus, वो वाली क्लास पक्का से देख लेना, वरना ये जो तुम इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हो, मान लेते हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बच्चों, when ascospores are formed within the sac ascus, they have to be endospores, and now they're going to germinate and go back to where they started from, hence the cycle. Some of the fruiting bodies can be eaten. For example, morels and truffles. Your NCERT says morels and truffles are edible ascocarps. Question in the NEET. सीधा question. What are morels and truffles? Are they basidiocarps? Are they ascocarps? Are they ascus? Are they ascospores? जनता क्या मार्क करके आती है वो भी बता देती हूँ मैं, इतने सालों से देख रही हूँ, सदियों से देख रही हूँ, इट्स बीन अ डेकेड एंड मोर। जनता मार्क करके आती है एस्कोस्पोर्स। मैम इतना अच्छा पेपर हुआ, पूछो मत, स्कोर आया तो प्रॉब्लम। सो इट इज एस्कोकार्प, द फ्रूटिंग बॉडी दैट वी ईट। अब एस्कस में जब मियोसिस होगा तो एस्कोस्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे 8 क्यों लिखा है मैम? मियोसिस से तो 4 बनते हैं। हाँ, 4 बनते हैं, कभी कभी रिपीटेड डिविजन्स के बाद। उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है यार कि एक सैक की क्या कैपेसिटी है, एक बारी में एक सैक कैरी करेगा 4 से 8, 6 से 8 एस्कोस्पोर, फिर रिलीज कर देगा, ज्यादा लोड नहीं लेगा और नया माइसीलियम बना देगा। एब्सोल्युटली क्लियर विद द बेसिक्स। अब ना मैं क्या करूंगी, फटाफट एस्कोमाइसिटीज में से ये सारे बच्चे लिखेंगे अपनी अपनी भाषा में, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, जिसमें लिखना है लिख लो। जहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात आती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज। क्यों? क्योंकि ये 12th क्लास में रिपीट होगा। ओके, सो आई एम गिविंग यू द मेंबर्स दैट आई रिमेंबर। कोई रह गया तो 12th में दोबारा आ जाएगा। फर्स्ट इज क्लेवाइसिप्स, पर्प्यूरिया, जो भी अभी यहाँ पे बम्बार्डमेंट होगी आई एम गोइंग टू वॉमिट इट आउट। पर्प्यूरिया, रेगड डिजीज ऑफ राई, रेगड डिजीज ऑफ राई, फास्ट फास्ट फास्ट। इसको अगर हमने खा लिया, ऐसी राई को खा लिया तो रेगटिज्म हो जाएगा हमें भी। उसके बाद एस्परजिलस, एस्परजिलस क्वेश्चन वेरी अच्छा, मैं ना स्टार लगाऊंगी एग्जामिनर के फेवरेट पे। इसको बोलते हैं वीड ऑफ लैब। भाई जब तुम बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, एमबीबीएस करोगे, वहां पे तुम्हें पैथोलॉजी लैब मिलेगी, पता नहीं सारी लैब्स मिलेंगी। तो वहां पे जो कल्चर मीडियम्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, सब ग्रो कर रहा होता है, ये उसको जाके परेशान करती है। इट इज कॉल्ड वीड ऑफ लैबोरेटरी, अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है जी हमारी पेनिसिलियम, है ना। पेनिसिलियम से मिली जी एंटीबायोटिक विच वाज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ओके, नोटेटम से डिस्कवर हुई थी, ये बाद में करेंगे। दीज 2 स्ट्रेन्स वाला ही 12th में आएगा, अभी आपको जीनस याद रखना है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा, ये भी 12th में आएगी। पता है क्यों?
इसके ऊपर भर भर के जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स जो बड़े बच्चे हैं वो जानते हैं. तो इट इज कॉल्ड एज द ड्रोजोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम. जो लिखेगा नहीं वो पछताएगा, जो सोबत है वो खोबत है भाई. उसके बाद न्यूरोस्पोरा के बाद किसको लेके आए? सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस स्ट्रेविसिए. व्हाट अ बिग नेम मैम. तुम सिर्फ सैक्रोमाइसिस याद रख लो. इसमें भी सच बताऊं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा 12th में. इट इज कॉल्ड एज द बेकर्स ईस्ट और द ब्रूअर्स ईस्ट, जो अल्कोहल इंडस्ट्री है. लेट्स सी द चैट बॉक्स क्विकली क्विकली क्विकली. भाई ये 5 में से क्वेश्चन ना आए ऐसा मैंने देखा नहीं है. एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है. विनर्स नेवर क्विट. भाई नीट की तो बात कर रही हूँ यार, और क्यों पढ़ाऊंगी इतना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मत बोलना. अच्छा क्लास के बाद ना मेरे नोट्स मिलते हैं एक जगह पर, पता है वो जगह तुम्हें? एक ऐसी जगह है जहां पर मेरे ये हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं. रियांश भटनागर, yes it is and you should. और मतलब you want to be associated with somebody who has created doctors since there was an exam. So yes, Aakash BYJU'S is the place. Yes, Deepak Sahu, thank you so much for all your trust and love यार. यार तुमने ये लिखा. अच्छा मुझे बताओ कहाँ मिलते हैं मेरे नोट्स, कहाँ मिलते हैं मेरे नोट्स, फटाफट बताओ. उसके बाद मैं जाऊंगी तुम्हारी अगली क्लास में. 1 मिनट रह गया. टेलीग्राम पे मिलते हैं. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग. यू हैव टू कीप स्माइलिंग इवन इफ इट इज आर्टिफिशियल. डू इट. ओके चलो, bye bye and I will see you in the very next class. Be regular to the classes and ask your doubts in the main comment section. Don't worry at all. Okay, bye.